उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको दिखाएगी कि वो हर स्पोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं। आज का जो इंडियन एथलीट है, और मैं बड़े फ्रैंकली बोलूँगा, जो आज का इंडियन एथलीट है, जितनी सपोर्ट इंडियन एलीट एथलीट को मिलती है, मेरा नहीं ख्याल उतनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन किसी एथलीट को कहीं भी दुनिया में मिलती होगी एज ऑफ टुडे। You know, whenever you interact with him, I've always sort of kept that it resonates with the kind of person that he is that he makes you feel absolutely comfortable. His dream of Viksit Bharat will become a reality sooner than the target date that he has set. मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलते रहते हैं और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए और किस तरीके का चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या कुछ मदद की ज़रूरत है तो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। हमेशा जिस भी इवेंट में हम मिलते हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है, तो हमेशा उनका अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा उनका यही रहता है कि आपको जो भी ज़रूरत हो आप कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। साई के थ्रू, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के थ्रू जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है वो हमेशा मेरी हेल्प करते आए हैं। काफ़ी सारी विशेष बातचीत है उनके साथ मेरी, क्योंकि उनसे जब भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वो सारी विशेष ही होती हैं मेरे लिए। तो पर कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मुझे काफ़ी याद है कि मैंने सिर्फ उनका नाम ही सुना था, मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं था। और इन पर्सन पहली बार मैं उनसे जब मिली थी तो काफ़ी वेलकमिंग किस्म के व्यक्ति हैं और काफ़ी समय देते हैं, अपना आराम से बातचीत करते हैं, उनको सारी जर्नी के बारे में पूछते हैं, आपका कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र। और अभी भी मुझे याद है, जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने चर्चा की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कॉन्वर्सेशंस ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का उनका जज्बा है खिलाड़ियों के प्रति, जो वो जाने से, किसी कंपटीशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और आने के बाद भी वापस मिलते हैं, और जिसका मेडल है या नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनका है उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए, और जिनका नहीं है उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बांधते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके का उनका स्वभाव है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली, तो आई थिंक वो स्वयं ही बताता है कि वो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा खेलों के प्रति उनका प्रेम है। वो कभी भी नहीं चूकते हैं किसी भी खिलाड़ी का नाम लेने में, उनकी जर्नी के बारे में, या फिर किसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो गेम्स में या किसी इवेंट में, तो वो कभी भी नहीं चूकते हैं। वो कोई भी मिस नहीं करते हैं डिटेल्स, उनको हमेशा सारा डिटेल्स पता होती है और वो हमेशा सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि किसका कैसा रहा, किसको क्या ज़रूरत पड़ी, और हमेशा तत्पर रहते हैं सहायता के लिए। उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको दिखाएगी कि वो हर स्पोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं। आज का जो इंडियन एथलीट है, और मैं बड़े फ्रैंकली बोलूँगा, जो आज का इंडियन एथलीट है, जितनी सपोर्ट इंडियन एलीट एथलीट को मिलती है, मेरा नहीं ख्याल उतनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन किसी एथलीट को कहीं भी दुनिया में मिलती होगी एज ऑफ टुडे। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर साइन कि द प्राइम मिनिस्टर रियली सपोर्ट्स not just cricket but every possible sport that is being played and where our athletes are representing India. Athlete कभी satisfy नहीं होता है, चाहे जितना भी बेस्ट कर ले, बेस्ट परफॉर्मेंस हो गए, जीत लेता है एथलीट हमेशा अगले दिन और भी बेटर करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर ऑल्सो विद द माइंडसेट जो मुझे दिखता है ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू break new frontiers, he's always tried to break new boundaries and always trying and pushing everybody, not just himself but also pushing everybody around him to get better than what
they were yesterday. So that is something which is very, very evident and which is very clear. So that I believe that our Honorable Prime Minister really has an athlete's mindset. वो एक बहुत ही अच्छे माहौल में मिलते हैं एथलीट्स को, एक बड़े फ्रेंडली माहौल में मिलते हैं और हर एथलीट को बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग वेयर उनके हर इंटरेक्शन में देखने को मिलता है कि वो हर एथलीट को इतने पर्सनली जाके उनको मिलते हैं और हर एथलीट जो भी उनको मिलने जाता है उनको कंफर्टेबल बनाते हैं. The Honorable Prime Minister has also put forward a very bold and ambitious vision of bringing the Olympics to India. ये बहुत ही as an athlete ये तो बहुत खुशी की बात है कि India is bidding for the Olympics, and I'm sure बहुत काम हो रहा है towards making that dream a reality. और बहुत ही अच्छा मैटर और ग्रेट प्राइड का दिन होगा जब ओलंपिक्स इंडिया में आए. तो आई थिंक बहुत कुछ काम हो रहा है एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर truly loves sport and he is leading every aspect of development of sport in a wonderful way. Whenever I've met, it was really encouraging. एक जो मैसेज बहुत ही क्लियर था, मैंने पहले ही बताया आपको तीनों बार कि सब ने मिलकर we have to really make sure that football grows in the country, and as I said, it means a lot. नहीं, फ़र्क पड़ता है जब फिट इंडिया मूवमेंट जैसी चीज़ें आती हैं बाहर, जब वो ओपनली बोलते हैं कि सारे देश को फिट होना है, हेल्दी होना है, और उसके बाद अपना दिनचर्या वो शेयर करते हैं, चाहे वो सुबह उठ के योगा करना हो, वॉक करना हो, खाने में अपना ध्यान देना हो, बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर एक लीडर आपको कुछ करने को बोल रहा है और वो खुद भी वो चीज़ें मानता है तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना. इससे फ़र्क पड़ता है कि हाँ, जो भी बोल रहा है वो खुद भी कर रहे हैं एंड आपको भी ये करना चाहिए. सो या कुडोस टू हिम. उनकी एज में वो भी बहुत फिट हैं. आई होप वो हमेशा ऐसे ही रहें, अपना योगा, अपना वॉक, अपना खाना पीना सबका ध्यान रखें और हमें इनकरेज और इंस्पायर करते रहे. आई वांट टू विश आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई होप आपका वो दिन थोड़ा रिलैक्स रहे, आपके जो मन में हो आप वो कर पाए. आप हमेशा खुश रहिए, आप हमेशा हेल्दी रहिए, and please keep inspiring and leading us. And yeah, very happy birthday, Modi ji. You know, I first met him in 2008 during an IPL game in Ahmedabad. Modi ji and Amit Shah ji, they were at the prize distribution ceremony, and I was captain of Kolkata Knight Riders, and we were playing in Ahmedabad, and I had lost that game to Rajasthan, I remember, and he was at the dais giving the prize, and I was captain, and I went up to him and shook hands and took the losing captain's prize, but then met him after that, spent time with him, and 2008, which is a long time ago, and had a small interaction, asking about cricket. Then he said ki, don't worry, you've lost, but you'll have a good team. That's when I met him first in 2008. The interaction didn't go too far because it was in the middle of the game, and he was also about to leave because he had been in the game right throughout, and he was Chief Minister of Gujarat and President of Gujarat Cricket Association. That was my first meeting, and yes, and didn't meet him after that because obviously he was Chief Minister and busy and traveling and so much time in running the state. But my meeting next in 2011 was something which I will remember. Hadn't met him since 2008 to 2011, and in 2011 I had just retired and was in Ahmedabad during an India-England test match. India lost that test match in Ahmedabad, and he was the Chief Minister. I contacted him 2 or 3 days ago and requested for an appointment because we wanted to do something in Ahmedabad, because Ahmedabad then and even now had the reputation of being very business friendly. And I remember going to Ahmedabad and giving him a call. He responded straight away, and I said I wanted to meet because I wanted to do something. He said, he was campaigning. I think there was elections in Ahmedabad that time, and he was campaigning around the state. So he said, Saurabhji, I am away for 3 days, but if you are there after 3 days, we'll meet up. I said, yeah, I'm there for 5 days of the test, and we'll meet. But to my surprise, the next morning, his private secretary from his office was at the Motera ground. It was Motera Stadium then, now it's Narendra Modi Stadium.
he was at the ground waiting for me at 9 in the morning, and he came up to me and said, Modi ji has sent me to you to find out what you need, and this will be done in quick time. So I told him what I wanted and what I was looking for in 2011, and said that I would love to meet him. He said yes, he finishes campaign in 3 or 4 days, and then if you're in Gujarat, we'll go and meet him. India lost the test match in 3 days in Ahmedabad because the wicket was spinning and turning, and England played very well, and I remember trying to get in touch, but he wasn't back from his campaign then. So the discussion finished and I came back, the series went on, India lost the series. Suddenly one fine morning, I get a call from his private secretary again, and I had not tried to get in touch. It was about good 3 weeks after that. He said, आपने तो बताया नहीं कि आगे क्या करना है, and that remained with me forever. You know, he was the chief minister of Gujarat. He wasn't sure that he'll become prime minister someday. But what stuck to me was that call after 3 weeks, that you meet someone and you express your desire to work in that state, and then you go quiet for 3 weeks because you realize that the elections are on and everyone will be busy, so you don't want to disturb them, and you get a call in the morning and saying that I have not got any feedback from you, how do we take this forward? And that remained with me forever. He is very keen to have a hospital in Varanasi, and that is something that he sometimes has asked. There was an occasion when there was a foundation stone laying ceremony for the stadium in Varanasi that was to take place, and Sachin Tendulkar, Ravi Shastri, Kapil Dev, myself, Roger Binny, who was the president of the BCCI then, we were all called for the foundation stone laying ceremony, and the Honorable Prime Minister was to come. We were told since the Prime Minister's program is pretty much second by second, minute by minute, and he came in and he spoke to Ravi first, and the next, when he came to me, I was standing there, came to me, and his first question was, Gavaskar ji, वो हॉस्पिटल का, वाराणसी के हॉस्पिटल का क्या हो रहा है? And so he actually saved me the bother of asking the question. And the UP CM was also just behind him. So I was able to say that yes, it is in process, and that Yogi ji is helping with that as well. He was also very anxious to know how we are going to not only the Varanasi hospital, how we are going to try and expand so that more and more children can be given this totally free of cost surgeries. I would like to wish the Prime Minister Modi is a long life, long, healthy life, a productive life as we have seen so far. And his dream of Viksit Bharat will become a reality sooner than the target date that he has set. Whenever you interact with him, I've always sort of kept that it resonates with the kind of person that he is that he makes you feel absolutely comfortable. You don't feel sometimes heads of state, head of the nation, you always are a bit nervous, but with him he makes you comfortable, gets very personal, he talks to you like any family member, and remembers all the meetings that you have had previously and goes back to those and sort of asks how has that progressed. So I think these kind of interactions certainly makes him very special, and the energy that he has, may he continue to have that kind of energy. I mean, nobody can really believe that someone can be so energetic with the kind of sort of time that he needs to give with running the nation. So it's wonderful to see him at the helm, and I wish him all the very best. पीएम साहब के लिए वर्ल्ड कप में लास्ट मुलाकात हुई थी हमारी, जो 2024 में हम जीतने के बाद
ट्रॉफी लेके फर्स्ट पीएम हाउस में गए थे। एंड एक बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जो चीज़ फर्स्ट टाइम सबके साथ मिले वो, मतलब फर्स्ट टाइम बाकी किसी और के साथ कैसे जैसे मिले वैसे मेरे साथ तो थर्ड टाइम था। एंड आई डोंट नो, सडनली जब मैंने हैंडशेक किया, उन्होंने गुजराती में बात की, हाय केम छे, मजामा। एंड इट्स सडनली उन्होंने बोला कि बाकी सब टीममेट्स भी थे। एंड अक्सर के साथ तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ, मैंने उसको प्राइज़ दिया हुआ है। एंड ये नडियाद से, एंड नडियाद के हमारा टमटम एंड चवानू मिक्सचर वो सब भी फेमस है। एंड ही स्टिल रिमेंबर एंड स्टिल उन्होंने वो चीज़ मुझे बोली। एंड आई थिंक मैं थोड़ा शॉक हो गया था। एंड कि कब मिले थे, 2015, 16, 2020, 10 साल। उससे पहले उन्होंने बोला कि तू जब छोटा था, तो मैं 16 साल का था, 2000 अराउंड 12, 13 के आसपास, 11 के आसपास होगा। सो 15 साल पहले, 10 साल पहले, स्टिल उन्होंने वो डेट, मीन्स पर्टिकुलर डेट नहीं, लेकिन उन्होंने बोला जब तू छोटा था मैंने तेरे को गुजरात में ये प्राइज़ दिया था। एंड he knows about Nadiad, and Nadiad I think he is in Delhi, and दिल्ली में I think 15 साल में उन्होंने कितने शहर देखे होंगे, क्या क्या किया होगा। एंड सो आई वॉज शॉक्ड। एंड सो तब मैंने सोचा, एंड आई रियलाइज कि जब जो वो बोल रहे थे कि आपको अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, आपको अपने ये नहीं भूलने चाहिए। एंड ही स्टिल नोज अबाउट नडियाद, क्योंकि आई थिंक वो नडियाद में भी 2 साल रह चुके हैं। एंड तो उनको वो भी पता है। एंड उनको वो नाम भी पता होना कि मैंने आपको, तब मैं इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं था, गुजरात का प्लेयर था 19 का, और तब भी उसका भी उन्होंने याद रख के बोलना। सो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही आई थिंक अ प्राउड मोमेंट, एंड ऑल्सो ए एक्साइटिंग मोमेंट कि आपके देश के प्रधानमंत्री आपको इस तरह से याद कर रहे हैं, और स्टिल आपके शहर के बारे में उनको पता है, और क्या उन इधर फेमस है, और वो सब की चीज़ में पता है। सो जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तब से उन्होंने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया है। उनका भी एक विजन था कि भाई हम लोग भी ओलंपिक्स में जाएं, हमारे भी ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आए, और काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट भी बढ़ा है, जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ। तो ये एक ख़ास बात है प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हों, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी हों, जो भी कोई मेडल लेके आता है या जो भी जिसका भी प्रोत्साहन बढ़ाना होता है, तो वो ज़रूर आगे आकर उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। जब वो गुजरात में थे एज अ चीफ मिनिस्टर, तब गुजरात की स्पोर्ट्स को भी बहुत आगे तक लेके गए, और अब जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा नाम हो भारत का, और उसके लिए वो जो प्रयास हो सकता है वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो रहे हैं, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ जन्मदिन की, और उम्मीद करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो ऐसे ही देश को आगे लेके जाएं। When India lost the World Cup finals against Australia in the same place at Motera Stadium, that was the time you need a prime minister to walk into the dressing room and say a few good words. The players were disappointed, they were dejected. I can understand their feelings. It's not the same. I have been in that situation in in South Africa when we lost the 2003 World Cup. Here is your prime minister walking into the dressing room, cajoling everyone, calling Rahul Dravid, and then patting his back, hugging Shami, and then, encouraging words for Rohit Sharma and Virat Kohli. That makes more meaning of the sport that you are playing. Wonderful gesture by our Prime Minister. For me, his leadership is largely to do with the groundwork, preparation, and in-depth analysis of a particular subject. I think that is always in the forefront. I think he is never unprepared for anything. I mean, he has so many things on his hand to think about. I mean, he has to lead the world, he has to lead the country, there are a lot of other big responsibilities, but he gets into the finer details of the sport. And that's wonderful. So it all leads to a leader preparing himself to the occasion, and that is in the forefront. Well, when we met him in
Raj Bhavan, I think one of the discussions was making sport a syllabus. I think that's a great idea. But then we have problems with the implementation, which he acknowledges as well. I think that has to start somewhere, and he has thought through it quite well already. So I think it's not far away. I think NEP has already had this idea of bringing sport as a syllabus into the education system. So, you know, that's a wonderful idea for a prime minister to think so deeply about sport. I think, it's going to benefit the country and the sport itself. When we met him in 2023 at Raj Bhavan, one of the main topics were about sport being a syllabus in our education. I think we desperately need that. I think our country is growing. I mean, our economy is doing so well. So I think economy and sports go together, and therefore I think sport being part of the syllabus makes it easy for the kids to take sport as a profession. So, you know, these kind of thoughts definitely helps, you know, at all levels. You know, going back in my childhood days, I couldn't even think about making cricket as a career. But with these kind of ideas being in place, and once implemented in a proper manner, I think kids can see sport as a profession. I wish our Prime Minister Modi ji a happy birthday on his 75th year, and I hope he continues looking after this country and have a long innings. I would like to wish our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. I speak on behalf of the Indian Chess Fraternity and the World Chess Federation, FIDE, in thanking the Prime Minister for his continued support for sport. And we send our best wishes on this happy milestone.